अब चलते हैं 4.9 सिमिलर लाइंस, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, बहुत बेहतरीन। तो भाई 4.9 क्या पूछ रहा है हमसे, वही डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाली बात। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ XYZ लिमिटेड which is expected to grow at a higher rate for 4 years after which the growth will stabilize at a lower level. लेवल्स बताए नहीं अभी तक। बेस ईयर इंफॉर्मेशन यानी आज की इंफॉर्मेशन जो है 2000 करोड़ रेवेन्यू, EBIT 300 करोड़, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा 280 करोड़, डेप्री 200 करोड़। इंफॉर्मेशन फॉर हाई ग्रोथ एंड स्टेबल ग्रोथ पीरियड आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट 4 years है जो हाई ग्रोथ रहेगा, द ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड EBIT वुड बी 20%, स्टेबल ग्रोथ यानी 5th year ऑनवर्ड्स बी 10%, ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रीसिएशन 20%, यानी दोनों 20% बढ़ेंगे, right? So the difference between the two also will expand by 20%, but for the first 4 years. Thereafter, capital expenditure are offset by depreciation. So when you calculate cash flows, we add back what? Depreciation, and then we deduct recurring capital expenditure which will occur year on year. अभी हमने सीखा था, right? ये offset हो जा रहे हैं। Done? तो हमारे आगे वाले सम में भी यही हुआ था। सो यहां से 5th year से कोई भी, इसको बोलते हैं डेप्री का एडिशन एंड कैपेक्स का डिलीशन, राइट? बोथ विल मैच ईच अदर, यानी बेसिकली माय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वुड बी इक्वल टू माय कैश फ्लो सब्जेक्ट टू देयर इज नो एडिशनल वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल, राइट? जो हमारे पिछले सम में हुआ था, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ एडअप नहीं हो रहा था, राइट? कौन से सम में? पिछले नहीं, पिछले टू पिछले, राइट? दिस सम 4.7। अगर वो हो रहा है, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? तो फिर क्या लिखा है भाई? RF कितना है? 10%, 9%, 5th year onwards, first 4 years 10%, equity beta 151, market risk premium, that is nothing but RM minus RF 6 and 5, pre-tax cost of debt 13%, 12.86%, debt equity ratio 1:1 and 2:3. I tell you, you have to deal with this as well. For all time, working capital is 25% of revenue. For all time, working capital is 25% of revenue, right? And corporate tax rate is 30%. What is the value of the firm? Right. Those are 10 marks. Interesting sum. There's one gray area which I'll discuss as we go along. सबसे पहले हाई ग्रोथ एंड लो ग्रोथ के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट कर लेते हैं, विच वुड बी रिक्वायरिंग फॉर पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग। Computation of cost of capital for first 4 years. पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है अपन को? नहीं पता है, तो क्या CAPM अप्लाई करेंगे? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, जो 6% दिया हुआ है अपने को। Expected return, or you can term it as KE, RF plus beta into RM minus RF. 16.9%.
प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना भाई? 13%. Post tax cost of debt 9.1. राइट, डेट इज टू इक्विटी क्या है भाई फर्स्ट 4 years के लिए? 1:1. Told me my WACC. %13 weighted average cost of capital. राइट, डेट एलिमेंट भी दिखाया यहाँ इन्होंने डेट इक्विटी रेशियो में, सो कंसिडर बोथ. सेकेंड थिंग, computation of cost of capital. For 5th year and onwards. क्या आएगा भाई यहाँ? कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले कितना बन रहा है? 1. RF है, RP है. Nine, 1 and 5 I suppose, right? 9, 1 and 5. Done. That's how much? 14%. Pre-tax cost of debt. भाई लगाते जाओ नंबर. 12.86%. Post-tax cost of debt. $9.002%. WACC 2/5 या 3/5 है? डेट इक्विटी 2:3 है, यानी 3/5 आएगा इक्विटी कंपोनेंट वेटेज. ट्वेल्व पॉइंट बहुत सारे जीरो और बाद में 8 है, तो अपन लिख देंगे इसको 12%. राइट, अब कैश फ्लो कंप्यूट कर लेते हैं. ये तो हो गया, अब कैश फ्लो कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं भाई.
तकरीबन अपन को 5 कॉलम बनाने हैं पर्टिकुलर छोड़ के। राइट, सेल्स से शुरू करने की, रेवेन्यू से शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीजन इज डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद ईबीआईटी फिगर्स, एम आई राइट? बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड ईबीआईटी इज 20%, एंड डायरेक्टली स्टार्ट विद ईबीआईटी, राइट? अल्टीमेटली वहीं से शुरू करना होगा, क्योंकि फ्रॉम सेल्स टू ईबीआईटी हाउ द जर्नी हैज टेकन प्लेस, नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. Sir, you wrote EBT, not EBIT. Okay, fine. I will write EBIT if you find me the I component in this. Capital structure is given. Great. Right. Ratios are given. Debt to equity 1:1, 2:3. Great. My question is, what is the quantum of equity capital? What is the quantum of debt? If some information is given, we can backward and calculate. But there is no information available by which we can calculate the interest component. Hence, EBIT would be treated as EBT. The glitch I was talking about in the sum, as the capital structure of the firm is not given, EBIT is considered as EBT. ये मेरा नोट है, ठीक है? करंट यानी ईयर जस्ट एंडेड का क्या सीन है? 300 करोड़. द नेक्स्ट ईयर क्या आएगा? 20% के हिसाब से ऊपर जाएगा, 360. 432, 518.4, 622.08, 684.29. क्योंकि 10% आ जाता है वहां से, 20 नहीं आएगा. फोर्थ तक जो है ये लागू पड़ेगा 20%, बाद में वहां से राइट 10% जंप हो जाएगा. स्लो ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ पीरियड, राइट? 20% अप्लाइज फॉर द फर्स्ट 4 years. Thereafter will grow at 10%. यानी 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 बार अप्लाई हो गया. 4th to 5th जो जा रहा है अपन, 4th end to 5th end, भी 10%, right? So EBIT or EBT has to be treated in the same way. Now, what do we have at hand? Capital expenditure and depreciation, right? वो सब हो गई बात. अब EBT आ गया तो सीधा सीधा टैक्स चार्ज कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे? सर व्हाट अबाउट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्री? See, any which ways we are standing at EBT means depre has been deducted, right? So what we have to now do after the tax entry is we add back depre and deduct capital expenditure and also account for working capital expenditure on a regular basis, because it is saying that working capital would be 25% of revenue, right? For all time working capital would be 25% of revenue. ठीक है, तो पहले हम लोग टैक्स का एडजस्टमेंट कर लेते हैं.
EAT कितना बना बालक, मारो हिसाब। We've got our EAT figures at hand. Time to add back depreciation, deduct working capital expense as well as capex. Right. So I have to make a working note over here. You can club it with the first working note also. It's fine. रेवेन्यू कितना है भाई, 2000 करोड़, 1400, वो 1 ईयर में आएगा, फिर 0 पे 2000 ही आएगा। टू 880, 3456, 4147.2, 4561.92, 25% at all times, 500, यानी currently the working capital is 500, right? 1 year down the line it should be 600, so additional is 100. To 880, 720, सर डायरेक्ट 20% मार दो ना, हिसाब हो जाएगा। ट्रू, 500 20%, 600 600, 20% addition 720, correct. %, 864, but I'm not calculating like that. I'm taking 25% of revenue. $172.8, again 20%, perfect. You go by the shortcut, I'll come by the long route. ठीक है? Now
मैंने और तो कुछ नहीं बोला. So first we'll add depreciation, deduct capex. See, both will increase at a rate of 20%. So instead of doing it separately, can I just take the net amounts of them? Very much. Depre gets added back to the tune of 200 into 1.2 and capex is 280, right? Growing by 1.2, right? That's 20%. ठीक है, तो वैसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 280 into 1.2. जहाँ शॉर्टकट अप्लाई करना है वहीं करना है, सब जगह नहीं करना. 336 माइनस क्या आया था भाई? 240, तो आ गया हमारा 96. तो हम लोग डायरेक्ट 80 into 20% अप कर सकते हैं 1.2, ये 96, राइट? और ये 4 साल ही चलने वाला है. बाद में capex and depre will start offsetting each other, so there will be no impact. Done. ये हम लोग क्या लिखेंगे? नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर. Students ask me, sir, how do we know? You know because I've taught you. You know because you will practice. You know when you will have experience. That's it. That's how you know where shortcuts will work, where it will not work. मालिक यहाँ ब्लैंक आ जाएगा. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी हमने हिसाब ही लगा के बैठे थे यहाँ. 100, 120, 144. फिर क्या था? 172.8. Is there a working capital requirement from 5th onwards? The answer is yes. क्यों है? क्योंकि ग्रोथ 10%, 10%, 10% टिल इंफिनिटी चलते रहेगा. आ रही बात समझ? ये कहाँ फ्लैटन अप कहाँ होता है पता है? जब there is a growth and then that growth stops, right? And we are maintaining ourselves at the same level. Over here, it continuously keeps on growing at 10% till infinity. So there would obviously be increase in revenue. 25% of revenue is nothing but working capital. So additional 103.68 needs to be added every year thereafter. So basically your profit after tax would not be equal to your cash flows, right? वो कब पॉसिबल है? जब वर्किंग कैपिटल एडिशनल नहीं चाहिए एंड डेप्री addition and capital expenditure deletion offset each other. $67.2. $81.64. Why the last number is so large? One, the basic EBT number is large. Second fact, right? Profit after tax भी जो earnings after tax है वो भी बड़ा number है. Net capital expenditure वो nullify हो जा रहा है. So there is no further clamping down of that number. And then there is a working capital component which is again not very large.
thereby giving fifth onwards a larger number, right? ये हमारा हो गया. क्या था भाई फर्स्ट 4 years के लिए WACC 13% था, फिर 12 हुआ. क्यूब आ जाएगा भाई, लिखो ठीक से. लास्ट वाला 75.32. यहां से क्या के बन रहा है बालक? 12%. फिफ्थ ईयर एंड से 12% एप्लीकेबल हो जाएगा, हाँ ना? सो व्हेन आई यूज D5 व्हाट आई गेट P4. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्रिकी है, रेट चेंज हो रहा है उसीलिए. सो दिस इज एंड ऑफ ईयर 5 ग्रोथ बोथ एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड, सो नो एडजस्टमेंट further required at the numerator. So 0.12 minus 0.10 A minus G into 1 divided by, now you got P4, you have to rock it back, but the first 4 years interest rate is 13%, so 1.13 raised to power 4. Be careful. To 17.42 first component, first 4, right, last one. भाई सेकेंड component क्या आया? फिफ्थ onwards 11,509.54. $17. 11,726.96. रुपीज इन क्या आएगा? सारी फिगर्स थे क्रोर्स में. डन. ये बन गई हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, राइट. The only problem over here is there is no hint regarding the size of equity, debt. तो हम लोग कुछ कंप्यूट करते एंड EBIT में इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी जोड़ते, राइट. तो इन लोगों ने वो पूरा स्किप ही मार दिया. जनरली क्या होता है, देन इंटरेस्ट कंपोनेंट वुड आल्सो इंक्रीज एट दैट पेस, ग्रोथ के पेस से, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग अप 20% देन 10%. तो and there is a changed capital structure, so maybe in order to avoid that extra complications they would have given it a miss. Barring that, the sum is a real good one, so I'll just go through the sum very quickly. Computation of cost of capital for the first 4 years, it's given कि भाई जो डेटा है हमारे पास वो CAPM वाला डेटा है, देख के मालूम पड़ जाता है. So we'll apply the CAPM data in order to figure out the cost of equity. That's 13% for the first 4 years. Post tax cost of debt would be 9.1%. You apply that, you get 13%. Computation of cost of capital for fifth year and onwards, we have
cost of equity at 14%, applying CAPM, and post-tax cost is 9.002, which all turns up to a WACC, weighted average cost of capital of 12%, right? 3 equity and 2 debt. Accordingly, we have done it. Then we need to jump onto the working note, figure out the additional working capital required. As the growth keeps on happening, 5th year and onwards, obviously we need to keep on piling up more and more working capital with that, right? So, which is 25% at all times of your revenue, right? And then we come to the next important part, EBT, tax, EAT is all simple. Net capital expenditure, because everything is growing, you see the capex and depre is growing at 20%. So difference would also grow at 20%. So first 4 years के लिए ही वो हो रहा है. 5th year, obviously depre add back and capital expenditure deduction is happening. So basically there's no treatment after your EAT point barring working capital. So हमने net capital expenditure लगा दिया for 4 years, 5th year से कोई impact नहीं है, as I'm reiterating time and again. Now additional working capital requirement needs to be deducted. We get cash flows, bring all the cash flows to present value. We get 11,726.96 crores, the value of the firm, right? Costless, कुछ तो था नहीं इसमें, काफी manageable. हाँ, ये interest की entry थोड़ा सा दिमाग खराब कर सकती है, थोड़ा lengthy है in terms of calculation with respect to WACC and stuff. But if you see 10 marks, it's a good deal. It's not a raw deal, trust me. Exact आपको capital structure components नहीं दिए, it's not given, so EBIT is considered to be the EBT and the sum has been solved in that manner, right? आ रही बात समझ? चलिए, कष्ट लेस.